तो सबसे पहले आपको गूगल अर्थ ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी, जो आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगी। और उस ऐप को खोलने के बाद आपके कोई सा भी स्क्रीन रिकॉर्डर या अपने फ़ोन का स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन कर लेना है। और जिस तरीके से इस गूगल अर्थ में मैं लोकेशन सर्च कर रहा हूँ, वैसे भी आप कोई सी अपनी एक लोकेशन सर्च करके स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन रखना। और फिर आपको एक कैपकट ऐप ऑन करनी पड़ेगी, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो वहां से जाके इस ऐप को डाउनलोड कर लिएगा। और फिर आपको जो हमने गूगल अर्थ पे स्क्रीन रिकॉर्डर से रिकॉर्ड करी थी, उस वीडियो को सेलेक्ट करके उस वीडियो को अपने हिसाब से एडजस्ट कीजिए। जिस हिसाब से मैं अपनी वीडियो को अपने हिसाब से एडजस्ट कर रहा हूँ, उस हिसाब से आप अपनी वीडियो को एडजस्ट कर लीजिएगा। और फिर वीडियो एडजस्ट करने के बाद एक इमेज ऐड कीजिए। जिस तरीके से इमेज मैं ऐड कर रहा हूँ, उस इमेज को सेलेक्ट कीजिए, फिर ऐड कीजिए। और फिर उस इमेज की जो ड्यूरेशन है वो 2 सेकंड की रखिए। और फिर उसका ट्रांजैक्शन पे क्लिक करके कैमरा के ऑप्शन पे क्लिक करके जो सबसे फर्स्ट वाला ट्रांजैक्शन है उस पर क्लिक कीजिए। और फिर इसी तरीके से, और आप जितनी चाहे इमेज यूज़ करना चाहें उतनी इमेज रखिए, और उनकी ड्यूरेशन हमेशा 2 सेकंड तक ही रखना। इससे आपकी वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बनेगी। जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ, उसी स्टेप को आप फॉलो करते रहिए। Let's have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like
I do right now. Don't say you're on the run to the other side, my love. You say you wanna try.